morning, children. Today we will learn the use of the. Okay, let us see. The is the definite article. Okay, so it is used before a noun when we want to make it particular. Like the train by which I came. Okay, the train. By using this the, we make this train particular. Okay, so many trains are there. Train is common noun. But after using the, it became particular. Okay, जैसे ही हम इसमें द लगा दिए मतलब ये एक पर्टिकुलर ट्रेन हो गया जिससे मैं आई, है ना. द ट्रेन बाय विच आई केम. सो बाय यूजिंग द वी मेक इट particular. Okay, now let us see the another example. The information I received. Which information we are talking about? Which I received. Okay, इसमें हम लोग किस इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं? जो मैंने प्राप्त किया, है ना. तो यहाँ पर हम लोग द लगा दिए और इस इंफॉर्मेशन को पर्टिकुलर बना दिए. ठीक है. द बुक्स आई यूजुअली रीड. हियर आई एम टॉकिंग अबाउट दोज बुक्स विच वी रीड यूजुअली. ओके, मतलब यहाँ पर हम लोग किस बुक की बात कर रहे हैं? जो मैं यूजुअली पढ़ती हूँ. तो बाय यूजिंग द वी मेक दिस बुक्स पर्टिकुलर. ओके, जस्ट लाइक दैट द मर्सी द किंग शोड. विच मर्सी? विच वॉज सोन बाय द किंग. ओके, कौन सी मर्सी? जो राजा ने दिखाई. बाय यूजिंग दिस सो वी मेक दिस मर्सी particular. Okay, so it doesn't matter whether a given noun is singular, plural, countable or uncountable. We use the before these nouns when we want to make it particular. Okay, now let us see. Train is countable noun. I have used the. Information is uncountable noun. I have used the. Books, countable noun, even though I have used the. And mercy is uncountable noun, but I used the. Okay, so it doesn't matter whether it is singular, plural, countable or uncountable noun. But if you want to make it particular, you will have to use the. Okay, now let us see the another example where we use the. We use the with a noun that has already been mentioned. It means if you have mentioned that noun already, then you will use the after using one time. Okay, just look at these examples. I got a camera and a watch as birthday present. The watch is beautiful, but the camera doesn't click. Okay, so we say a camera and a watch because it was mentioned first time. That time it could be any camera or any watch. जब हम लोग इसको फर्स्ट टाइम मेंशन किए तो कोई भी कैमरा हो सकता था और कोई भी वॉच हो सकता था. बट व्हेन वी मेंशन सेकेंड टाइम, इट मीन्स आफ्टर बीइंग मेंशन वंस दे गेट पर्टिकुलराइज्ड. ओके, सो आफ्टर दैट वी यूज द. ओके, जस्ट लुक एट दिस. द कैमरा एंड द वॉच. हियर आई यूज द एंड हियर आई यूज द. यहाँ पर हम सेकेंड टाइम में द यूज किए. क्यों? क्योंकि जब हम लोग फर्स्ट टाइम बोले तो कह सकते थे कोई भी कैमरा हो सकता था, है ना, कोई भी कैमरा, कोई भी वॉच. लेकिन जब हम एक बार इसको मेंशन कर दिए कि वो कैमरा और वो वॉच जो हमको बर्थडे पे मिला, तो सभी लोग जान गए कि किस कैमरा और किस वॉच के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. तो इसको जब हम लोग सेकेंड टाइम मेंशन करेंगे तो हम लोग कैमरा के पहले द लगाएंगे और वॉच के पहले भी द लगाएंगे. इसका मतलब क्या हुआ कि when we mention any noun second time or after being used of noun, we use the with those nouns. Okay. Okay, now we will learn the third use of the. Okay, we use the when it is clear from the situation which people or thing we mean. जब हम लोगों को सिचुएशन से ही पता चल जाए कि किस पीपल या किस थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम लोग द लगाते हैं. ठीक है, जैसे द प्रिंसिपल इज टेकिंग अ राउंड ऑफ द स्कूल. इज ऑब्वियसली इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल. ओके, जब हम ये कहें कि प्रिंसिपल इज टेकिंग अ राउंड ऑफ द स्कूल, इसका मतलब ही है कि हम अपने स्कूल के प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहे हैं. क्योंकि दूसरे स्कूल में कोई प्रिंसिपल अभी राउंड पे है या नहीं ये कैसे पता चलेगा,
है ना। तो इस सिचुएशन में हम लोग द लगाते हैं, जैसे द प्रिंसिपल, ओके, द प्रिंसिपल इज टेकिंग अ राउंड ऑफ द स्कूल, ओके। मे आई यूज द टेलीफोन, नाउ आई एम आस्किंग फॉर परमिशन, ओके, परमिशन के लिए पूछ रहे हैं। मे आई यूज द टेलीफोन, तो वहां पर निश्चित रूप से वो टेलीफोन कोई होगा जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो सिचुएशन से ही पता चल रहा है कि वहां पर उस आसपास कोई टेलीफोन होगा, है ना। तो वहां पर हम लोग क्या लगाएंगे, द। सो मे आई यूज द टेलीफोन। नेक्स्ट, वी यूज द विथ सच फ्रेजेस एज इमीडिएटली सिंगल आउट और स्पेसिफाई अ पर्सन और ऑब्जेक्ट, ओके। सो व्हेन वी वांट टू सिंगल आउट एनीवन, जैसे फ्रेज, कोई भी फ्रेज, जैसे द फर्स्ट बिल्डिंग, द फर्स्ट। पहले तो हम लोग ये जान लें कि फ्रेज क्या होता है। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डजंट कंटेन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। मतलब फ्रेज क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट या प्रेडिकेट ना हो। और यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जब हम लोग किसी फ्रेज को यूज करते हैं किसी भी नाउन को सिंगल आउट करने के लिए, तो वहां पर हम लोग द लगाते हैं। जैसे यहाँ पे बोला है द फर्स्ट बिल्डिंग। मान लो कोई तुम्हारे घर आ रहा है और पूछ रहा है कि आपका कौन सा बिल्डिंग है, तो इमीडिएटली यू विल से द फर्स्ट बिल्डिंग, द सेकंड बिल्डिंग, द फोर्थ बिल्डिंग, ओके। उसको क्या कर रहे हो, तुम सिंगल आउट कर रहे हो, मतलब सारे बिल्डिंग से उसको अलग करके बता रहे हो कि कौन वाली बिल्डिंग, द फर्स्ट बिल्डिंग, द सेकंड बिल्डिंग, ठीक है। तो वैसे सिचुएशन में हम लोग द लगाते हैं, जैसे द फर्स्ट बिल्डिंग, द नेक्स्ट कैंडिडेट। नाउ हियर आई मेक इट स्पेसिफाई। इसको हम लोग क्या किए, स्पेसिफाई कर दिए, मतलब किस कैंडिडेट के बारे में बात कर रहे हैं, जो नेक्स्ट कैंडिडेट है, मतलब उसके आगे में जो होगा उस कैंडिडेट के बारे में बात कर रहे हैं। सो द नेक्स्ट कैंडिडेट, ओके। द लास्ट डे, व्हेन विल यू सबमिट योर प्रोजेक्ट, मैम ऑन द लास्ट डे। इट मीन्स वी हैव स्पेसिफाई दिस, है ना। ये हम लोग स्पेसिफाई कर दिए कि किस डेट को हम लोग इसको सबमिट करेंगे, लास्ट डेट, ठीक है। उसी तरह द ओनली चाइल्ड। अब मान लो कोई ऐसा हरकत है जो सिर्फ बच्चा ही कर सकता है, ठीक है। आइसक्रीम खाया, पूरे बदन में लगा लिया, ठीक है। तो उसको हम लोग हु हैज डन दिस, तो कैसे बोलेंगे, द चाइल्ड ओनली, मतलब सिर्फ एक बच्चा ही ऐसा कर सकता है। तो हम लोग उसको क्या किए, सिंगल आउट कर दिए, ठीक है। वी यूज द विथ सुपरलेटिव्स। सो वी यूज द विथ सुपरलेटिव्स। सुपरलेटिव मीन्स व्हेन वी want to compare any noun more than टू, ओके। जब हम लोग दो से अधिक लोगों के बीच किसी भी नाउन का कंपेयर करते हैं, जैसे बोलते हैं ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, मतलब वो पूरे क्लास में सबसे अच्छा है, तो हम लोग वहां पर क्या करते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वी यूज द विथ सुपरलेटिव्स, द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई। अबाउट विच स्टार वी आर टॉकिंग अबाउट, द ब्राइटेस्ट स्टार, ओके। कौन वाला स्टार, जो सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट है, चमकीला है, ठीक है। द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई। द नेक्स्ट वन, द मोस्ट हिलेरियस एक्ट। विच एक्ट वी आर टॉकिंग अबाउट, द मोस्ट हिलेरियस एक्ट। सारे एक्ट्स में जो सबसे अधिक हिलेरियस है ना। तो हम लोग जब सुपरलेटिव डिग्री बताते हैं और जब हम लोग किसी एक नाम का कंपेयर बहुत दो से अधिक लोगों के बीच करते हैं या दो से अधिक नाम के बीच करते हैं, तो वहां पर हम लोग द लगाते हैं, ओके। द नेक्स्ट यूज ऑफ द, वी यूज द विद अ कॉमन नाउन व्हेन इट इज सिंगुलर इन फॉर्म एंड रिप्रेजेंट द होल क्लास। जब कोई नाउन सिंगुलर फॉर्म में हो और पूरे होल क्लास को रिप्रेजेंट करता हो, तब वहां पर हम लोग द लगाते हैं। जैसे द काउ गिव्स मिल्क, इट इज सिंगुलर इन फॉर्म बट रिप्रेजेंट द होल क्लास। ये काउ जो है वो सिंगुलर फॉर्म में है, यहाँ पर हम लोग एस नहीं लगाए हैं, लेकिन ये पूरे होल क्लास को ये रिप्रेजेंट करता है ना। जैसे द काउ गिव्स मिल्क, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर एस लगा दें तो यहाँ पर हम लोग द नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। व्हेन वी यूज द, व्हेन एनी नाउन इज सिंगुलर इन फॉर्म बट रिप्रेजेंट्स द होल क्लास, ओके। जस्ट लाइक दैट, द डंकी इज बेस्ट ऑफ बर्डन। Donkey is beast of burden. Here we are not talking about the single donkey, okay. Here we are talking about the whole class of donkey, okay. But it is written in singular form of noun. So here we will use the, okay. The next use of the is, we use the when there is only one of something.
ओके. When there is something unique, मतलब कोई भी चीज यूनिक हो और कोई भी चीज सिंगुलर हो, एक ही हो, तब हम लोग वहां पर क्या लगाते हैं? द. जैसे अर्थ के पहले लगाएंगे द अर्थ, मून, इट्स यूनिक, द सन, द स्काई, द इक्वेटर, द नॉर्थ पोल, द ईस्ट, द वेस्ट. ओके, जस्ट लेट अस सी दिस एग्जांपल. द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू हेमिस्फीयर. ओके, equator is singular, or you may say that it is unique also, so here we will use the. Okay, the sun shines over the north pole for 6 months. Okay, the north pole, here I use the north pole. Okay, okay, the next use of the is we use the with the name of these things. Okay, हम लोग the का यूज कब करते हैं? जब इन चीजों का नाम हम लोग लेते हैं. जैसे river, when we write the name of any river we use the, but if you write only river then you will not use the before that. Okay, if you are saying there was a river, okay, एक नदी थी, तब वहां पर हम लोग अ लगाएंगे. ठीक है, लेकिन जब तुम उसका नाम बताओगे, जैसे द ब्रह्मपुत्र, here this one is the name of a river, that's why here we will use the. Okay, seas and ocean, if you write only seas and ocean you will not use the. Okay, but if you write the name of seas and ocean you will write the. Okay, you will use the Arabian Sea. Okay, mountain ranges, when we write the name of mountain ranges we will use the, like the Aravallis. Okay, holy books, if you are writing the name of any holy books you will have to use the, like the Gita, the Quran. Okay, if you are writing the name of train, ships and aeroplane you will use the. Okay, like the Shatabdi Express. Okay, and if you write the name of anything like train, ship and aeroplane you will use the. Newspaper, the Indian Express. Okay, this is the name of the newspaper, so here we will use the. Well-known buildings, means, or you may say that monuments. Okay, so we use the before monuments or well-known buildings like Red Fort, Qutub Minar, Taj Mahal, Lotus Temple. Okay, so we will use the before these well-known buildings. Countries, okay, if we will not use the before any countries. Countries, if the name contains a common noun, अगर ऐसा कोई नाम कंट्री का हो जो कॉमन नाउन को कंटेन करता हो, तब हम लोग वहां पर क्या लगाएंगे? द. जैसे द यूनाइटेड किंगडम, किंगडम इज कॉमन नाउन. ओके, किंगडम इज कॉमन नाउन, सो वी विल यूज द बिफोर दिस, द नेम ऑफ दिस कंट्री. ये कंट्री का नाम में किंगडम लगा हुआ है, और किंगडम जो है वो किंगडम क्या है? कॉमन नाउन है, इसलिए यहाँ पर हम लोग द लगाएंगे. ठीक है. द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्टेट्स इज कॉमन नाउन. ओके, स्टेट्स इज कॉमन नाउन and it is used in the name of this country. Okay, so here we will use the. Okay, the whole families, when we talk about the whole families we use the, like the Gandhis, it means we are talking about the whole member of that Gandhi's family. Okay, so here we will use the Khans. Okay, so you have to remember the name of these things where we use the. If you are writing these things only, you will not use the. But if you are writing the name of these things, you will have to use the before this common noun. Okay. अगर हम लोग सिर्फ रिवर की बात करेंगे तो वहां पर हम लोग द नहीं लगाएंगे. There was a river, there is a river. But if you are writing the name of river, you will use the. Okay. So same thing you have to repeat in all these. Okay. Okay. Let us see the next use. We use the with adjectives. Okay, when those adjectives are used as noun. हम लोग adjective के पहले the लगाते हैं तब जब वो adjective noun के जैसा यूज हो, है ना. Law should be fair to the lucky as well as the unlucky.
lucky and unlucky both are adjectives, okay, but we are using these words as a noun, okay. That's why here we will use the. Law should be fair to the lucky as well as the unlucky, okay. There should be equal opportunities for the rich and the poor. Rich and poor both are adjectives, but here we are using it as a noun. यहाँ पर हम लोग इसको नाउन के जैसा यूज कर रहे हैं, इसलिए इसके पहले हम लोग द लगाएंगे. इट मीन्स कि रिच हो या पुअर सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, है ना. नेक्स्ट यूज, द यूज ऑफ द इन द फॉलोइंग. ऐसे कंडीशन में ये फिक्स है, हम लोग द ही लगाते हैं. जैसे द मोर द मरियर, द नियरर द चर्च द फर्दर फ्रॉम गॉड, ओके. द एग्स आर सोल्ड बाय द डजन, okay. Petrol is sold by the liter. We always use the, okay. Let us see the next use. We say go to the cinema, the theater, okay. When we say that we go to the cinema and theater, we use the, okay. Just let us see this example. I often go to the theater, but I haven't been to the cinema for a long time. It means we use the before cinema and before theater. We usually say the radio, but television is used without the, okay. हम लोग रेडियो के पहले द लगाते हैं, लेकिन टेलीविजन के पहले द नहीं लगाते, ठीक है. So whenever you want to say, if you are using radio, then you will use the, but if you are saying about television, you will not use the before that, okay. Next use, the use of the in the following expression. Some expressions are there in which we use only the, okay. ये कुछ expression है जिसके साथ हम लोग सिर्फ the लगाते हैं, ठीक है. On the one hand बोलते हैं ना, एक तरफ ये है दूसरी तरफ ये है, तो वो क्या है, expression है, और उस expression में हम लोग the लगाते हैं. जैसे on the one hand, second on the other hand, on the other hand मतलब दूसरी तरफ ये बात है ना. तो हम लोग जब वो एक्सप्रेशन को शो करते हैं तो वहां पर द लगाते हैं, ठीक है. टू स्पीक द ट्रूथ, ये एक्सप्रेशन जो है इसके पहले भी हम लोग द लगाते हैं. टू रीड इन द ओरिजिनल, ओके. हियर ऑल्सो वी विल यूज द. टू प्ले द सितार, ओके. सो हियर इन these expressions we use the, okay. So in this way today we will learn the use of the. So please like, share and subscribe my channel to be the first to see the latest video. Thank you.